And welcome back again to Game on Hay. We're discussing today's match between Australia and Sri Lanka. Won, of course, comfortably by Australia. Time now to look at some of the key performances, the individual performances of the day. I'm going to hand it straight to Sana to talk about Mitchell Starc with your very, very eminent panel on the left here. So, Starc की bowling के बारे में हमने थोड़ी बात भी की, उनका हम पैकेज भी अभी देखेंगे. आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें उमर, किस तरह की बॉलिंग नजर आई आपको? नहीं, द वे जिस तरह उसने बॉल के साथ स्टार्ट किया है, अर्ली ऑन उसने स्विंग करने की चांस लिया और ऑल्दो उसको स्विंग मिला भी है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि स्टार्क जिस तरह ही यूज्ड टू रन फास्ट एंड स्मूथ, मुझे थोड़ा सा अभी भी या तो इसका रिदम का मुझे कुछ फ़र्क लगा या कोई इंजरी वगैरह कि आज भी वो सुबह जब दिखा रहे थे इसकी कोई नी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आई स्टिल मेरे ख्याल से इसका वो रिदम उस तरह नहीं लग रहा जिस तरह ही यूज्ड टू रन फास्ट एंड स्मूथ, लेकिन स्टिल उसकी बॉलिंग एक्सपीरियंस पेस अभी भी उस तरह है, लेकिन मे बी आगे जाके उसकी जो भी प्रॉब्लम है रिदम का या इंजरी का, आई होप कि वो ठीक हो जाए. और जिस तरह हम एक स्टार को देखते थे, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर, तो आई थिंक एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़बरदस्त होगा, फिर दूसरा ये कि उसके फ़ैन भी चाहते हैं कि जिस तरह वो दौड़ता था, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मैं ज़रा मिस कर रहा था आज के मैच में भी. So Umar is saying that he has been struggling with a few niggles. So even though he has bowled really well, but he felt that the run-up missed that kind of rhythm and his bowling missed that rhythm. So what do you think? Aaqib, let's come to you then, because that Yorker didn't seem to lack rhythm, it didn't seem to lack pace, it didn't seem to lack direction. You know, sometimes fast bowlers can never be 100% fit. You always, take one or two niggles, but still he is one of the best. Still bowling at 145, sometimes touched 150. The quality of Starc is like Wasim, Starc, left-armers. Even the Shaheen. The Shaheen is different. Haris Rao, Waqar Yunus, slightly round arm, and when they deliver, they release the ball. It's not like this. Not seam up, Slinging right? it. Seam up, you actually bang on the pitch and kill the pace. And their ball lands like this. Most of the time, not on the seam, slightly on the side, and it skid through. Kissing the surface. Skidding through. Even though on flatter pitches, these kind of bowlers can still be dangerous. Skidding through into the stumps, and especially the Yorkers are very effective. And it helps more than the seam-up bowlers. They have more chances of reversing the ball. Viv, did we know about this sort of stuff? I'll tell you something. Did anyone tell us about these sort of things, these tricks of the trade? What chances are we going to have when you have guys doing such? They're special. And especially when you can come around the wicket and get the ball to straighten. How are you going to play that? Yes, not easily. No. But, okay, for the batsman, what do they learn by watching the hand? Sometimes you watch the hand and you still don't get it right. Because these guys are good. Most time you try and watch the wrist, and you spoke about maybe Shaheen. Yeah. He's also different because he's basically the snap of the wrist. From here, then bang. this, then. They all have their different styles. It's going to be difficult to play, Dave. Okay, well, we'll stay in here. It's much, much safer in here. Next man then to discuss, Adam Zampa. So, come back to Aaqib in a moment, but he's always been saying that the wrist spinners, the special spinners, are the people to watch. What do we think? Yeah, हम लेग स्पिनर्स की अब बात करें. आज राशिद खान की भी एक वीडियो देखी, वो बता रहे थे कि 5 से 6 डिफरेंट ग्रिप्स हैं उनकी बॉल करने की. ज़ैम्पा की बॉलिंग के बारे में कुछ बताएं. ज़ैम्पा का ये कि इनकी जो वेपन है उनके फ्लिपर है, जिस पे अगर स्ट्रैट देखे जाएं तकरीबन 6.13 का इनका स्ट्राइक रेट यहाँ पे इकोनॉमी रेट है. गूगली पे भी 5.13. इसका मतलब है ये दो बॉल्स इनके बहुत ही इफेक्टिव है. रीड नहीं हो रही बैट्समैन को, चाहे वो राइट हैंडेड बैट्समैन हो, बैटर हो या लेफ्ट हैंड हो. अगर लेग स्पिन में देखते हैं लास्ट ईयर में 8.94, इसका मतलब कि ये लेग स्पिन इन्होंने थोड़ी कम करते हैं और मार बहुत लगती है इनको, इसलिए ज़्यादा ये फोकस है फ्लैट बॉल, फ्लिपर एंड गूगली पे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है T20 में ये. So he's saying that his stats for the googly and flipper are much better than his stats for a proper leg spin.
Because he's not a big turner. You know, where he is good, varying his pace and staying in the stumps. And in Australia, is more successful because of the extra bounce. Even though pitches like Asian Asian pitches is not that effective, but still good enough. But in Australia, with bounce and skidders and sliders, it's very effective. हम वो पैकेज भी चलाते हैं अजहर आप उसको डिस्क्राइब कर खेले सकते उसके हैं साथ मैं इसके साथ सिडनी टेलर में खेला हूँ so he is very improved bowler मतलब जो है ना I think one of the best bowler for Australia जो है ना इसकी क्वालिटी ये है कि इसका जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था ना फ्लाइट पाथ अगर आप देखें इसका वो इतना आसानी से आप इसको रीड नहीं कर सकते क्योंकि हाथ ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाता तो ये वेरी करता है सम बॉलर जो है ऊपर से बॉल छोड़ते हैं और ये जो है ना वेरी करता है यहाँ से भी छोड़ता है और यहाँ से भी छोड़ता है और जो इसका रोंगन है वो जो है ना थोड़ा ऊपर से छोड़ता है और ज़्यादा होता नहीं रीड नहीं होता वो रीड नहीं होता He's not a big turner, so it's difficult to pick. But for instance, that first wicket, which was Asalanka, it was a little bit of a googly, and that sweep shot, instead of going out of the middle of the bat and maybe going down or going further, just a little bit of a top edge, top half of the bat, and you end up with the catch. So actually the googly, especially to the left-hander, and I thought also another point for all of us was that first couple of balls, Pereira was going for the reverse sweep. It looked like they were really going to try and go after him. Yeah. So then it's important to come back and you pick up the wicket and the game changes. Oh, definitely. That's why, you know, the leggies are always a wicket-taking option, you know, whenever they go. And because this guy is very clever. It's like a Shane Warne, you know, when you speak to him, sit down with him and, you know, he got plans and it's not easy. And he can bowl googly from up top here and from the side as well. So it's very difficult to pick him when you haven't faced him for a long time. Who would ever expect to see leg spinners at this particular level? Because as you know, in the olden days, you get 5 seam-up guys who will come and do it for you. But these are the most important individuals today in limited overs cricket, are the leggies, the guys who are filled with lots of tricks. Those are the ones who are going to get it done then. Well, this is Aaqib's point. At your time, Abdul Qadir as well. He was special. He was seriously Look, special. if we look at comparing the teams who are struggling in this World Cup, this team haven't got mystery bowlers or leggies wrist spinners. Like Bangladesh, they got none of the bowlers who can bowl leggies. There are no options. And West Indies. This young Sri Lankan team, why are we hopeful? Because they have 2 good spinners. One is difficult to pick, and this is a proper leggy, and they've got 2 fast bowlers. So this team can merge. If you have, though they're young, but they have a quality. If you look at their batters, they go after you, and they're aggressive, and they have the talent to improve and take this team forward. And Well, you said Mickey Arthur. Yes, Mickey Arthur did it with तो Pakistan. करता क्या? I mean, वो मिक्की की problem जो लोग कहते हैं, he came to Pakistan and tried to build a new team. He always have a problem with the senior players because he's the kind of individual who wants control. But I don't think so. अच्छा नहीं देखो from outside जो मुझे लगा बाहर से कि वो अभी भी वहाँ गया है तो उसने रिटायरमेंट दी वो क्या ऑलराउंडर जो उनका परेरा उसने स्टेटमेंट्स भी दी कि ये सारे बच्चे चाहते हैं लेकिन एंड में वो टीम बना लेते हैं अब ये जो टीम है ये अगर इसकी पिक्चर्स देखो और आगे 3 साल में देखो तो ये वो टीम है जैसे परेरा ओपन ग्लिम्पसेस ऑफ जयसूर्या आपके पास स्पिनर्स हैं तेज बॉलर्स हैं एक और इनको तेज बॉलर मिल जाए they are good to go anywhere in the world. Well, so I'm enjoying this because this multicultural society of ours in here is swapping sides like there's no tomorrow. It's good the chairs have wheels. Well, we can just keep going around in circles. No, and the points are good. I'm sure whatever you said was absolutely valid. All understand. Let's move on to batting though, because I mean, we'll come back to Australia later in the analysis. But the batting for Sri Lanka started so very positively.
Yeah, I think definitely Pereira and Salanka उनके बारे में हम पैकेज भी चलाते हैं Pereira का. राशिद भाई आप क्या देखना चाहते हैं इनकी बैटिंग कैसी है? परेरा को काफी टाइम हो गया खेलते हुए, लेकिन अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इनको बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन मिस कर गए. 35 रन किए. ये ऐसे प्लेयर है जो गेम को चेंज कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. इनको किया इन्होंने और अच्छी बॉल हुई, आउट हो गए. लेकिन ये प्लेयर ऐसे जैसे आकिब ने कहा कि इनके पास स्पिनर्स अच्छे आ गए हैं, और टॉप पे अगर देखें तो पेरेरा जैसे बैट्समैन है और कुशल पेरेरा, ये गेम को चेंज करने वाले हैं. और ये ऐसी टीम है कि आगे जाके किसी की पार्टी खराब करेगी जरूर, चाहे वो. इनकी टेक्निक आपको फास्ट बॉलर्स पे, स्पिनर्स पे, शॉर्ट दोनों ऑफ पे लेंथ अच्छी पे, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे. इनको आगे बॉल की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको इश्यूज होते हैं थोड़े आफ्टर में कट. और ये राइट हैंड बैट्समैन थे. ये इनको कन्वर्ट किया क्योंकि सनत जयसूर्या को बहुत पसंद करते थे, तो ये बचपन में कन्वर्ट हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन और कॉपी करते हैं सनत की. Viv, how important do you reckon Kusal is? Because he's been around this team for a while. We know what he can do, but he seems to be one of these players who some days he's on, some days he's not. This was important for him, I think, personally, to get some runs today. But obviously, what they needed too was a win. Well, he's a very crucial player in the Sri Lankan team. I've seen him bat over the years, and every time that I've seen him, really, he's scored maybe something rather decent. It put his team in a very good position at times. If you notice, he's physically a strong-looking individual, and when he hits it, it stays hit. And what I'm so impressed about with some of the Sri Lankan batters, and you speak about the talent in the team, is the bat speed. You know, in order for you to generate power, you must have good bat speed, and especially I think with Pereira. Yeah, they're pretty good at that. So as you say, the future looks good, Javed. Yeah, there's people like him you can continue to build around, and Aslanka as well, coming through very nicely. I suppose that the disappointment for both of them was having got to 35 very quickly each. They couldn't make it bigger, because then, of course, if they stay in, you've got a better platform, got a better chance for some hitters to come in later, got a better chance for a bigger total. Yeah, because look, gear shifted after 10 overs. The ball behaving differently, the pitch behaving differently. You need to learn a bit more. And another thing, Zampa coming in and Mitchell Stark with the reversing, I think there was a challenge. Stark and that Leggy, they actually changed the gears. So they need to learn how to survive even a 1 over and then can put pressure on the other bowler. Because you have to understand that why Mitchell Stark is coming to bowl in the middle to take wickets. So sometimes you give 1 over a respect to a bowler and then charge the other one will come next. What do we think of the other guy, Charit Aslanka? Because he's coming through, young man coming through with some awesome shots. Well, as you say, if you can have a young team like this playing as well as they do now, obviously, I take your point earlier in terms of having them now in the future. If they can remain together, stay fit, they're going to be an awesome team in the future. Sometimes it's so important not to always go with your most experienced players, but if you're looking for the future, to make sure that you get young guys like these individuals as early as possible. And that's a Just great little shot. That's a and great shot, isn't yeah, it? Just, little yes. shot and jump. Didn't fully commit. Look at the bat speed. Amazing. That creates the power. Look at that again. Well controlled. That's what he was Beautiful trying shot. to do when he got out as well. He Beautiful. just wanted to keep it down. But that's control, that's placement. This is just one of those ones that slides down the leg side and finds the boundary. And This is anyone who can hit straight and long, this hasn't quite come didn't out quite level. time No. that as well, Yeah. but you can see the intention. What do you all guys think about this? असलांका की ओवरऑल टेक्निक के बारे में और जो बॉलिंग लेंथ्स इनको की गई हैं इस मैच के, उसके बारे में बताएं. आई थिंक कि अभी सर ने भी बात की, जिस तरह जो है ना शॉट अप जैब जो है ना वो खेलता है, जैसे पुल शॉट जो है ना, और इनका हैंड स्पीड की बात की उन्होंने, दोनों बैट्समैनों की हैंड स्पीड और पिकिंग द लेंथ वेरी अर्ली. तो दोनों बैट्समैन अगर आप पेरेरा को देखें, इसको देखें, तो मिचेल स्टार्क को भी उन्होंने पुल मारा था, तो लेंथ बड़ी जल्दी पिक कर रहे हैं और पुल खेल रहे हैं. और एनीथिंग लेफ्ट हैंडर के लिए आपको होता है कि ज़रा सा वाइड उनको विथ मिलती है तो दे ओपन द फेस ऑफ द बैट और पॉइंट के ऊपर से खेलते हैं. तो ही गॉट ऑल द शॉट इन हिज बुक, यू नो, लाइक
then definitely जो हम बात कर रहे थे कि 35 किया जो आकिब भाई ने बात की कि then how you gonna convert these 35 into 50 this is very important कि किस वक्त जो है ना आपने करना है because अगर T20 में अगर आप एक crucial time पे आप set होके विकेट गिर जाती है आपकी तो नए बैट्समैन आके थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा एंड स्पेशली एट मिडल पीरियड व्हेन स्पिनर इज बॉलिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू कम इन एंड गेट द सेम रन रेट गोइंग क्योंकि ओपनर्स की हमने बात की है कि वो ना सिर्फ तो अच्छे रन्स आके बनाते हैं पर ज़रूरी ये भी होता है कि वो टीम के लिए टारगेट सेट करें पिच की कंडीशंस के मुकाबले में। तो उमर आप बताएं इस तरह के बैटर्स दोनों लेफ्ट हैंडर्स आपके सामने हो क्या आपका क्या गेम प्लान होगा पावर प्ले के अंदर? पावर प्ले में तो यही था कि मैं तो स्टार्ट में करता लेकिन बाद में जो हमारा कम्बिनेशन जिस तरह बना हमने प्लान किया कि मैं पावर प्ले के बाद मोस्टली लेकिन ओवरऑल मैं अपने स्ट्रेंथ पर रहता था क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेंथ का पता था। मैंने बहुत कम पावर प्ले में बॉलिंग की लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती थी जब ऊपर से जब रन्स पड़ते थे तो हमेशा मैंने लेंथ पे और कोशिश करता था कि विकेट टू विकेट बॉल करूं क्योंकि आपके पास चांसेस होता है कि आप अगर बैट्समैन मिस कर जाए तो यू गॉट 2-3 चांसेस एलबी के बॉल के चांसेस होते हैं। हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे रहता था यॉर्कर और बाउंसर में ज़रूर अटैम्प्ट करता था। ये सक्सेस थी मेरे पावर प्ले में। थैंक यू। How very polite, thank you. With these batting lineups in this tournament, one of the key phrases we hear is matchups. So the ability to match the right bowler to the right batsman, the ability maybe to switch left and right handers. How important do you reckon that is as this tournament goes on? Well, I take my hats off to the individual who decide they're going to switch it and all that sort of stuff, because when you look at maybe a Maxwell, you know, that's a shot that's been pretty effective for him over the years. And maybe this third ball that he would have faced today, he went around bang doing that. So that you must have a level of confidence in order for you to accomplish that. I can remember when I played, I hardly wanted to sweep because I felt that sweeping, that's going to give an opportunity to the bowler. If I was going to go big, it's straight down the ground, long on or long off. But these guys, man, sometimes they take some chances. Now you have to be brave in order for you to accomplish that. But that's okay. But that's also sort of testimony to your ability and your strength. I mean, not just physical strength, or strength in terms of what's best for you. So if you're very good at hitting it straight down the ground, some of these grounds, of course, the dimensions change a bit. Sometimes the boundaries are shorter, so you have the temptation as well, which I've seen so many times. When people look at a short boundary and think, I can clear that, and you don't quite get it, and it's the trap. The trap is the short boundary, whereas the longer boundary, you know you've really got to smack it. So that is why most times, you know, as a batter, regardless of whatever size may be smaller than the other, it's important that you try and play everything on its merit and try and take advantage of your strengths. And also try and put the bowler off. If you're the batsman trying to take command, and the example I mentioned was Pereira, who the first ball from Zampa was trying to switch away straight away. I mean, look, in 96 World Cup, I still remember in this region, who changes the mindset of 50 over cricket? Jayasuriya and Javed, Kaluutrana. Yeah. I mean, look, before that, most of the players just waiting for the bad ball. So if you're playing McGrath or somebody who's very accurate, then when you will start hitting. So here we come, you know, big shots, taking risk, but it was most of, you know, long on, long off, mid wicket, extra cover. But afterwards, what next? The next is like, you know, switch hit, reverse sweep. Nowadays you need to do something because as the time goes up, bowlers improve their skills, you know, slower ones, back of the hand, mystery bowlers. And if you in a trap of any mystery bowler, and if you don't know how to switch it or sweep or paddle sweep, you got no chance. But these two, you know, especially the Mendes and Asalanka and Rajapaksha, the other day when they're playing against Bangladesh, at one point it was felt that, oh, they can't make it. But the way they attack the bowlers, I think this is the next level approach, batting approach. So team needs to learn if you wanted to improve, have more mystery bowlers, leggies, wristy, Chinaman, and your batsmen need to learn. It's not that
all the time, all the time this and waiting for the bad balls. But would it be fair to say that most of these shots that you see are predicted? Predicted, You know, it's like Premeditated. premeditated. This is the one that I'm going to go at, and to me sometimes that can be quite fatal. Yeah. Do you want to check with Rashid what new tricks there might be coming up? राशिद भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में अभी हम पहली इनिंग्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो पाकिस्तान के साथ भी सेमीफाइनल में आ सकती है जी तो लग रहा है। इसकी बॉलिंग लाइनअप हम इन्हीं को हरा के फाइनल में जाएंगे। तो क्या समझते हैं इनकी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप का जो एक बैलेंस है इसको कैसा रेट करें आप? देखिए बैटिंग तो इनकी क्लिक कर सकती है लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा एक जो बात की थी वीक लिंक है इसमें वो स्टॉइनिस बॉलिंग कर रहे हैं मैक्सवेल के साथ 5th and 6th बॉलर और कोई भी बड़ी टीम जब आएगी ना इसको यूटिलाइज की इन्होंने भी आज यूटिलाइज किया 51 रन किए इनके ऊपर लेकिन जैम्पा भी अगर 20 रन और दिए होते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती जैम्पा क्रूशल रहे बॉलिंग इनके ऊपर से बहुत ही अच्छी है न्यू बॉल मिचेल स्टार्क करते हैं या साथ में हैजलवुड है कमिंग्स है तो ये बॉलिंग तो इनकी अच्छी है लेकिन स्पिनिंग में देखें एक ही बॉलर है जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो है जैम्पा इनके पास कोई एस्टन एगर है लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे वो अगर आते हैं लाइक शमसी और महाराज इस तरह के दो पेयर होने में एक पेयर होना चाहिए जो कि स्पिन अटैक में यूएई में काम आ सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम 90% अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है लेकिन जो वीक लिंक लग रहा है वो 5th and 6th बॉलर पे लग रहा है जो कि हर कोई इसको अटैक करेगा यहाँ पे आके वो अब किसकी जगह पे आ सकते हैं आपके साथ नहीं इसी पे जाना पड़ेगा इनको इसको स्टॉइनिस को बॉलिंग कभी 2 ओवर 3 ओवर करेंगे कभी मैक्सवेल अच्छी बॉल न्यू बॉल करेंगे 2-3 ओवर इनके बन जाएंगे अच्छा राशिद एक थॉट है अगर वो जो उनका लेफ्ट आर्म ऑप्शन है इन पिचेस के ऊपर अगर मिच मार्श की जगह अगर वो उसको लेकर आए आई डोंट थिंक सो मिच मार्श जो है ना उनका मेन प्लेयर है नॉर्मली वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था आज मैचअप्स डेविड टॉक अबाउट मैचअप्स के उसको मैचअप की वजह से जो है ना मैक्सवेल को भेजा है कि उस वक्त स्पिनर बॉलिंग कर रहा था कि जाके रिवर्स स्वीप खेले तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको करेंगे अगर स्टोनिस की बात करें ना ये वीक लिंक है मिच मार्श भी बॉलिंग करता है ठीक है आपके पास एक्स्ट्रा एक बॉलर भी आ गया और स्टोनिस जो है ना वो डेप्थ ओवर बहुत अच्छे करता है यॉर्कर वो बहुत अच्छे मारता है हमने बिग बैश में भी देखा है हमने आईपीएल में भी देखा है वो अच्छी बॉलिंग करता है आईपीएल में अच्छी बॉल की है इसने पर स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहा था मिच मार्श पिछले मैच में इतना देखो जो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ना जो यहाँ पे आए हैं इनमें फिंच है जो यहाँ पे आईपीएल वगैरह खेले हैं या डेविड वार्नर है ये लोग खेले हुए बाकी लोगों को जहाँ पे बॉल ग्रिप होगा तो ये लोग स्ट्रगल करेंगे बट इनमें इतनी एबिलिटी और स्किल है जैसे ऑरन फिंच की बात करें तो ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर यू नो डाउन द ग्राउंड लेकिन वो स्वीप भी बड़ी अच्छी मारते हैं और निकल के जो मारता है मतलब ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास लेकिन मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट आई फील दैट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर टू स्पिनर्स एंड यू प्लेइंग इन यूएई you might struggle. Why England looks better because they got two very good, very effective. And Livingston as well. Yeah. So I don't know on these batting pitches, sort of batting pitches. Not Dubai and Abu Dhabi is not a big challenge for the batting, and you don't need somebody at bat number 8 and ball a bit. So why can't you have a proper five bowlers and then 7 batsmen? Why not? You know, Ashton Agar got a world record of 10th wicket partnership. You know, this guy can bat as well. You don't need eight batsmen. I'm just saying I that. was quite happy about that because England, as we were talking the other day, have all these bowlers who are having a good time at the moment. Yes. Moeen Ali, Rashid, they're all going well. And they bat down to number 10 as well because Rashid is there at number 10. So if you're looking for a side to beat, gentlemen, mind you, it's early days yet, I understand. England. Very early days. We are the one that says that Rashid has 10 first-class centuries. I said. I'm not in what number? Number No, 10. number, yeah. So he's That's batting pretty at number high. 10, yeah. But I still have to see an Australian who doesn't know how to bat. I mean, generally, all their bowlers, even number 10, number 9. You haven't seen Rodney Yes. Hogg? Okay. What we'll do? I think Let's start the search. We'll start the search. You can think of an answer. Come back after the break in whichever language you're loving this in. We'll be right back with you.